Very good morning to one and all. My dear student, I am your social science educator and today I am going to teach you class 9th social science. If you see in your screen that today we are going to start the very important chapter of civics, जिसको हम लोग political science भी कहते हैं. If we talk about the social science, the examination point of view and especially for class 9th, as you know that class 9th is the base class of class 10th. बोर्ड क्लास के लिए हमारी बहुत बेस क्लास होती है. सो वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक in length and we just try to find out that what kind of questions has come in your examination. 9th class is very important क्योंकि अभी आप लोग 8th क्लास से 9th में आए हैं and the concept and the criteria and the level of studies are totally different in class 9th and class 8th. So being a social science educator, I am here you to sort out all your queries related to the social science. So I welcome you in my class. I am going to start the very first chapter of social science that is known as constitutional design. जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं. अगर मैं बात करूं कि व्हाट द थिंग्स and what the important elements are given in this chapter, so my dear student, this chapter reflect about the constitution, reflect about the rules and the norms, how a country run. किसी भी देश को अगर आप लोग देखें तो कोई भी देश है विदाउट नॉर्म्स, विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन वो चलता नहीं है. To run a country, every country government need a set of rule. हर देश को एक देश चलाने के लिए एक set of rule की आवश्यकता होती है and that set of rule is known as constitution, in which the different type of rules, different type of regulations, different type of norms are mentioned and according to which a government have to perform and the citizen of that particular country also have to follow all the rules and regulation which is mentioned in the constitution. So first of all, as I am going to start this chapter, I suppose to explain that what is the definition of constitution and ये constitution है क्या, why every country have their own constitution and what is the importance of a constitution for a particular country. If you see the notes, there are few things are given here about the notes that we will discuss about the South Africa and all, but before starting about the story of South Africa, we will tell you that what is the constitution. If we talk about that, the constitution can be defined as the set of rule which the citizen and the government have to follow. Constitution is just kind of set of rule according to which a government, according to which a citizen have to follow all the rules and regulation which is mentioned in the constitution. A citizen or the government cannot go beyond the constitution. Every elected government have to just follow, have to act according to the constitution rules. कोई भी सरकार है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित रूप से लिखा हुआ है उसके हिसाब से ही वो एक्ट करती है. अगर कई बार ऐसे लगता है कि द गवर्नमेंट इज नॉट परफॉर्मिंग देयर फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देन देयर इज ए अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हम दूसरे चैप्टर्स में बताएंगे. मैनी टाइम यू हैव सीन दैट कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी बात को लेकर संज्ञान लिया या सुप्रीम कोर्ट हैव गिव द डायरेक्टिव टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू दिस वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन. सो बेसिकली Constitution is just a set of rule according to which a government as well as a citizen have to work according to the rules. The supreme law of the country, it lay down the rights and the freedom of the citizen and power and responsibility of the government. Not only the rules and regulation, even the fundamental rights, even the fundamental duties, even the duties and the function of the government, each and everything
are mentioned in the constitution. Suppose that India is a democratic country and every citizen of India have right to enjoy their fundamental right. All these rights are mentioned in the constitution. Being a citizen of India, what are the duties of a citizen? All these things are mentioned in the constitution, and all the acts, all the articles, all the rules and norms according to which a government have to perform all these things. ये पूरे के पूरे नियम कायदे कानूनों का एक गुच्छा है जिसको हम लोग बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. One of the recent countries which is designed to formulate the constitution, that is South Africa. Basically, we are going to start this chapter with the story of South Africa, but before to start the story of South Africa, I suppose to explain about the constitution. So in general word, the constitution is a set of rule, law which is citizen and the government have to be follow. ये rules का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का और लॉज का एक सेट है और जिसको हर नागरिक को पूरा करना होता है. एंड इट इज ऑल्सो एम्फेसाइज, इट इज ऑल्सो इंक्लूड द ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड अदर थिंग्स ऑल्सो अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट हैव टू परफॉर्म. भारत सरकार में या किसी भी देश की सरकार में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद होते हैं, जितने भी सरकारी महकमे होते हैं, जितने भी उच्च पद होते हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, व्हाट आर देयर ड्यूटीज एंड हाउ दे फंक्शंस देयर वर्क अंडर ऑल द लिमिटेशंस. ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन इन द constitution. So in a simple word, the constitution is a set of the rules and regulation according to which every government and its citizen have to follow it. There are some duties, some fundamental rights and all these things. कहानी इस तरीके से है बच्चों कि किसी भी देश के बारे में एक समस्त अधिकार, उसकी नैतिक मूल्य, उसकी ड्यूटीज, सभी चीजों का एक गुच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. एंड अकॉर्डिंग टू विच अ गवर्नमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, हैव टू फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो टू रन अ कंट्री, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी नेसेसरी. कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, उसके बिना कोई भी देश साधारण रूप में चल नहीं सकता है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, दैट दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्या क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूशंस में होती हैं. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एंटायर स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका एंड हाउ द साउथ अफ्रीका just formulated their rules and regulation, how the South Africa just make their constitution, and while making the constitution what kind of challenges, what kind of problem the South Africa have to face. We will discuss this in the next chapter. So till then, तब तक के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं बच्चों.